What's up guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. So this is an urgent emergency update for all of you. लास्ट 1 घंटे में मार्केट बुरी तरीके से धंस चुका है एंड कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ऑब्वियसली अस. एंड ऊपर से आई एम नॉट अलाउड टू मेक जोक्स ऑन दिस मार्केट रिगार्डिंग दिस अपकमिंग ब्लैक फ्राइडे सेल. ये क्रिप्टो करेंसी में ब्लैक फ्राइडे सेल बोलेगा तो लोग जूते मारेगा. एनीवे, आई एम नॉट मेकिंग एनी जोक्स, बट लेट्स गेट बैक टू दैट सीरियस इशू. There is a very positive update from Zappays on this cryptocurrency ban in India. So let me read this out for you first. So private currencies, the term private currency has not been clearly defined by the government, but here is our understanding. Seriously, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है कि प्राइवेट करेंसी बोल के ये लोग किसको नोटिफाई कर रहा है. So anyway, जब अर्नब ने ऑनलाइन ऑन वीडियो पे आया था, मैंने गाली भी बका था. So Bitcoin, Ethereum and other such token holders, you are on the safe side. Bitcoin and Ethereum, you are safe. These are completely public cryptocurrencies as they are built on public blockchain network. Transactions are traceable, however they are completely anonymous. इसके मतलब Bitcoin and Ethereum का जितना भी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इथरस्कैन के थ्रू, BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन के थ्रू, मतलब बाइनेंस भी अगर कोई BNB होल्ड कर रहा है, BUSDT, USDT, ट्रू USDT, इवन मैं आपको बता देना चाहता हूँ शिबा इनू भी लीगल है क्योंकि शिबा इनू का हर एक transaction is traceable. Even personally, I have shared few transaction histories with all of you guys for so long time. So anyway, for all of those who are making it issue कि Shiba Inu भी ban हो जाएगा, नहीं होगा. So private cryptos on the other hand may refer to the coins like Monero and Dash that are private tokens. I don't know why, but although they have given quite a very good reason, although these are built on public blockchain network like Bitcoin, क्योंकि Monero and Dash ये सब टोकन्स बैक इन 2017-13 पे क्रिएट हुआ था जब बिटकॉइन मार्केट पे आया था. मतलब बिटकॉइन के व्हाइट पेपर के ऊपर ही ये दोनों कॉइन भी, इवन लाइट कॉइन भी, बट लाइट कॉइन इज लीगल. आई डोंट नो, दे हैव नॉट गिवन एनी क्लियर आइडिया ऑन लाइट कॉइन, बट आई थिंक लाइट कॉइन विल बी लीगल. दे हैव टेकन ओनली दिस टू नेम Monero and Dash because they conceal transaction information to provide privacy to users. Like any users who are like using this Dash and Monero for their transaction purpose. If you guys don't know, then let me tell you, Litecoin, Monero and Dash, they are alternative to Bitcoin. They have only one value which is transaction value. इसके ऊपर और कुछ नहीं हो सकता है. But Bitcoin is revoluting itself. That's different. But Monero, Dash and Litecoin, including Bitcoin, इन चारों का purpose same है. Only value transaction. Only your money transaction from one place to other place, one wallet to other wallet. That is the main use case of cryptocurrencies. So again, while this is just board speculation, the term has to be clearly be defined for better understanding. We are awaiting further information. So in much simpler way, मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ जब मैंने इतना डीप आ ही गया है. There is two types of tokens as of now. One, Ethereum based token. Second, Binance based token. Binance Smart Chain, ERC20, Ethereum blockchain. तो ये दोनों सिस्टम के ऊपर, मतलब मोस्टली जितना भी क्रिप्टो करेंसीज है ये दोनों इकोसिस्टम के ऊपर बेस्ड है. एंड रहे बात बिटकॉइन का, लाइटकॉइन का, Monero, Zcash, ये सब का अलग ही फंड है. मतलब बिटकॉइन का जो व्हाइट पेपर है, इन व्हाइट पेपर के ऊपर बेस्ड करके ये 4-5 टोकन है. अगेन डॉज कॉइन भी बिटकॉइन के ऊपर बेस्ड करके है. बट आई एम नॉट क्लियर, आई एम नॉट टेलिंग कि डॉज कॉइन बैन होगा. आई एम नॉट क्लियर, आई एम जस्ट गिविंग आइडिया कि गवर्नमेंट के हिसाब से या फिर जितना भी हम लोग की इंडिया में एक्सचेंजेस है, एक्सचेंजेस का जितना भी बड़े बड़े सर है, तो उन लोगों के हिसाब से जितना भी क्रिप्टो करेंसीज है, उस क्रिप्टो करेंसीज का ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. मतलब आप अगर इतना पैसों का खरीद रहे हो, ऑल्दो आपके नाम पता नहीं चलेगा, लेकिन देयर हैज टू बी सम प्रूफ कि इतना बिलियन, इतना मिलियन का क्रिप्टो करेंसीज खरीदा गया है. So that's their main motto as of now. So जैसे कि इथरस्कैन पे दिखाते हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन के जो नेटवर्क है उस पे जो दिखाता है इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये सब ट्रांजैक्शन के चलते जितना भी करेंसीज इसमें आता है, दे ऑल आर सेफ. एंड भाई साहब, बिटकॉइन को कोई बैन नहीं कर सकता है बिकॉज ही इज द किंग. बिटकॉइन इज द लॉ मेकर. बिटकॉइन को कैसे बैन करेगा? सो बिटकॉइन इज द सेफर साइड. दो बिटकॉइन, Zcash, Monero, they all based on same structure, but बिटकॉइन को कोई टच नहीं कर सकता है.
So now let me give you some technical overview. So Bitcoin का प्राइस बहुत दिनों बाद थोड़ा सा सुकून आया था. तो Bitcoin का प्राइस आफ्टर टचिंग 59,215 टच करने के बाद स्ट्रेट वाटरफॉल के जैसा $54,546,000. But I am expecting $52,000. I am expecting little more crash क्योंकि Bitcoin का जो 52,000 का सपोर्ट लेवल है, which is the ultimate support level. It's not only for Bitcoin. That ultimate support level is for entire cryptocurrency market. So check this left hand side and right hand side. This entire block is built upon this 52,000 support level. So बहुत दिनों पहले मैंने बिटकॉइन का ये ओवरव्यू वाला वीडियो में ये कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में बताया था. एंड कप एंड हैंडल पैटर्न का जो शोल्डर है विच इज एग्जैक्टली $52,000. So that $52,000 is the ultimate support band for Bitcoin as well as the entire cryptocurrency market. Now for Shiba army, let's check the Shiba's movement. I would not say कि Shiba is doing great, but yeah, support wise Shiba is playing fantastic. Check this support level. जो हम लोगों का support level है between 38 and 39 exactly. Shiba वही support level पे आके ऐसे लटक रहा है. So anyway, it's not the first time. लास्ट के 2 दिन भी सेम सपोर्ट लेवल पे हम लोग अपना दिन खत्म किए हैं. So सपोर्ट लेवल वाइज शिबा इज होल्डिंग वेरी टाइटली, बट आई वुड नॉट से कि ये एक बुलिश मोमेंटम है क्योंकि मार्केट का हालत अभी ऐसा है. बुलिश नाम भी नहीं लिया जाता है क्योंकि क्या पता आज उठेगा 10% तो कल गिरेगा 20%. सो एनीवे मार्केट अभी थोड़ा अनस्टेबल है. मेरा मानो तो आज कुछ भी मत करो, जस्ट चेक. बट ब्लैक फ्राइडे का सेल जो है वो तो भाई मार्केट पे ऑन है. So that's it from my side guys. I hope this was useful to all of you. And anyway, ये बैन लेके ज्यादा टेंशन ना लो. गवर्नमेंट ने बोल दिया बैन अगर होगा भी, they will give all of us 3 months. Either you cash it or you transfer it to some other wallet. See, cryptocurrency का यही एक मैजिक है. आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो सेफ एंड सिक्योर तरीके से. So 10 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स, 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू मार्च के बाद अभी ये चल रहा है नवंबर, पता नहीं और कितना करोड़ ऐड हो गया है. So don't take stress, keep your पोजीशन बहुत प्राइसलेस होता है. So I hope this will help you guys. Share this video with your friends and family. सबको जानने का मौका दो भाई. आप जान के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा. आप जान के बैठ जाओगे और जो 10 जन नहीं जानेगा वो सेल कर दिया जाएगा, आपका मारा जाएगा. तो प्लीज share this video with your friends and family. Share this as much as possible. And I am posting each and every update in our Telegram channel. तो उस Telegram channel का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. So be our guest. Wait for my next update. Till then, Dave signing off.